की व्यवस्था करते। इस दौरान रामानुजन ने इंग्लैंड के कुछ नामी गणितज्ञों से पत्र व्यवहार भी शुरू कर दिया। 16 जनवरी 1913 को उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर जी.एच. हार्डी को पहला पत्र लिखा। पत्र के साथ उन्होंने अपने करीब 120 फॉर्मूले भी भेजे। इस पत्र ने रामानुजन के जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। रामानुजन के फॉर्मूले देखकर प्रोफेसर हार्डी चकित रह गए। उनमें से कुछ गलत थे, पर कुछ पहले ही गणितज्ञों द्वारा खोजे गए थे, परंतु कुछ फॉर्मूले ऐसे भी थे जिन्हें गणित की एक महान प्रतिभा की ही खोज सकती थी। डॉक्टर हार्डी समझ गए कि रामानुजन एक उच्च कोटि की प्रतिभा है और आरंभ में रामानुजन समुद्र यात्रा के लिए तैयार नहीं थे, पर अंत में मान गए। मद्रास विश्वविद्यालय ने उन्हें इंग्लैंड में गणित के अनुसंधान के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की और अप्रैल 1914 में रामानुजन इंग्लैंड पहुंचे और उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ गणित का अपना अध्ययन और अनुसंधान आरंभ किया। रामानुजन जैसी मौलिक प्रतिभा को संभालना और संवारना बड़ा ही कठिन काम था, लेकिन हार्डी इसमें सफल रहे। 5 साल के इंग्लैंड निवास में रामानुजन के कई शोध प्रबंध निबंध गणित की प्रख्यात पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। ऐसी जन्मजात प्रतिभा को संवारा प्रोफेसर हार्डी ने। दोनों की शिक्षा दीक्षा और असमता आस्थाओं में जमीन आसमान का अंतर था। हार्डी रामानुजन से 10 साल बड़े थे। उन्होंने गणित की विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। जब 1914 में रामानुजन के पास पहुंचे तो वे संसार के एक श्रेष्ठ गणितज्ञ के रूप में ख्याति पा चुके थे। दूसरी ओर रामानुजन एफए में 2 बार फेल होने के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ चुके थे। 21 साल की आयु में ही उनका विवाह हो गया था, जबकि हार्डी आजन्म अविवाहित थे। रामानुजन आस्तिक थे। इंग्लैंड की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खान पान की ब्राह्मण प्रथाओं का पालन करते थे और अपना निरामिष भोजन स्वयं पकाते थे। हार्डी घोर नास्तिक थे, ईश्वर को अपना शत्रु मानते थे। रामानुजन की अधिकांश गवेषणाएं संख्या सिद्धांत यानी संख्याओं के गुणधर्म से संबंधित है। संख्या सिद्धांत में सवाल पेश करना तो काफी आसान होता, परंतु हल खोजने में बड़ी कठिनाई होती है। डॉक्टर हार्डी के सहयोग से विकसित किए गए रामानुजन के विभाजन सिद्धांत का उदाहरण लीजिए, दैट इज पार्टीशन थ्योरी जो थी। सवाल है किसी धन पूर्णांक को अन्य पूर्णांकों के योग के रूप में कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। हम जानते हैं जैसे 3 को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इसी तरह 4 को 5 प्रकार से, सो ऑन। तो वो उन्होंने आगे और भी तरीके से इसको एलेबोरेट किया। लेकिन जैसे जैसे संख्या बड़ी हो जाती है वैसे वैसे उसके विभाजनों की संख्या भी तेजी से बड़ी चली जाती है। गणना से पता चलता है कि 200 को हम इस टाइप से अरब खरब प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। रामानुजन ने हार्डी के सहयोग से एक ऐसा फार्मूला खोज निकाला जिसकी सहायता से बड़े पूर्णांक के विभाजनों की संख्या के बारे में लगभग सही जानकारी मिल सकती है। रामानुजन के अधिकांश उनके बारे में कहा जाता है कि संख्याएं उनके लिए विधिवत, वे अपने दिमाग में ही तेजी से गणनाएं करके सवाल का शीघ्र हल प्रस्तुत कर देते हैं। एक बार का किस्सा है, रामानुजन बीमार थे और इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में दाखिल हुए। डॉक्टर हार्डी टैक्सी में बैठकर गए, उन्हें देखने गए तो टैक्सी का नंबर 1729 था, जिसे हार्डी ने बोला कि इट इज नॉट अ लकी नंबर, लेकिन रामानुजन ने बोला कि नहीं, इट इज अ लकी नंबर बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब और 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। तो 1912 और 13 में रामानुजन ने जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी को 4 लघुपत्र भेजे। अपने कैम्ब्रिज वर्षों के दौरान रामानुजन ने 21 शोध पत्र प्रकाशित किए। इनमें से 5 जी.एच. हार्डी के सहयोग से थे। उनके 31 पत्र पहली बार 1927 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किए गए थे। कैम्ब्रिज में अपने 5 साल के प्रवास रामानुजन ने कई विषयों पर 21 शोध पत्र प्रकाशित किए। कुछ डेफिनेट इंटीग्रल पर हैं, मॉड्यूलर इक्वेशंस पर हैं, रीमन जीटा फंक्शंस पर हैं, इनफाइनाइट सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज, एडिटिव नंबर थ्योरी, एसिम्प्टोटिक फार्मूला, मॉडुलर फंक्शंस, पार्टीशंस एंड कॉम्बिनेटोरियल एनालिसिस। प्रथम महायुद्ध के कठिनाइयों के दिनों में रामानुजन 5 साल तक इंग्लैंड में रहे। अपनी कठोर जीवनचर्या ने और इंग्लैंड की प्रतिकूल जलवायु ने उन्हें तपेदिक का मरीज बना दिया। मार्च 1919 में वे भारत लौटे और 1 साल बाद 26 अप्रैल 1930 को 32 साल की छोटी सी उम्र में मद्रास में इस कर्तव्य की मृत्यु हो गई। So this was the some slide presentation of this Ramanujan's. So I am very thankful. I am very thankful to all. Thank you, Professor Tiwari ji. Yes, sir. I request next speaker, Professor P.K. Mishra, Professor and Head, Department of Mathematics, BHU, Banarasi. Topic of the Mishra
G. Data Science and its Mathematical Foundation. Now, request to deliver to lecture Professor Mitra. नमस्कार सर। जी, थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं हम सब लोग। बिल्कुल, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा ये प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा? जी, दिख रहा है। थैंक यू। Today we discuss about the introduction to data science, its mathematical foundation. So we have basically categorized our lecture in 3 modules. First one is the data science. Second part is the machine learning algorithms. And third one is the artificial intelligence. So let us start from the part 1. That is, it's a very common thing that is in the mind of the students. That is what is data science. Data science is nothing but an interdisciplinary and multidisciplinary field which uses the scientific methods, process, algorithms, and systems to extract knowledge and insights from many structured and unstructured data. So it is a technique and theories drawn from many fields within the context of mathematics, statistics, computer science, domain knowledge, and information science. And these fields are not just limited, but the data science is beyond that also. Turing Award winner Jim Gray imagined that data science as a fourth paradigm of science, that is empirical, theoretical, computational, and currently now the data-driven approach. So what today we are seeing that is the Google and other search engines. They are earning their revenue for the company using the data science approach. Okay, so this is some research background. That is Google revenue earned around $50 billion per year from marketing, and 97% of the company's revenue through the data science. Sponsored search usage and auction, which is a pure competition of markets trying to win access to consumers using the data-driven approach. So in other words, we can say that a competition for models of consumers, their likelihood of responding to the ad and of determining the right bid for the item is also done by the data science. So there are around 30 billion search requests a month, and perhaps a trillion events of history between search providers is made through the Google AdWords and the Google AdSense marketing approach. These are to Google AdWords and Google AdSense is the business model for the marketing of the Google. So in this way, we can say that that is the data is the new oil for the companies. It is said by the World Economic Forum in 2011. So you can see in this figure, there are a tree which consists of different domains, and which shows that that is the data is the new oil, and we can earn the revenue through the data. Now, only data cannot do the miracles. There is the behind some algorithms. That is algorithms is known as the machine learning algorithms, and it is the part of the data science. So here you can see that is data science is behind the artificial intelligence, machine learning, and the deep learning approach. So the question arises from the young minds, that is what is the machine learning
and what is the data science, how they are different from each other. So we have just concise the things into the categorization, that is what the things which differentiate the machine learning and the data science. So the concept is the machine learning develop new individual models, and it provides the mathematical properties of the models. It improves and validates on a few relatively clean and small data sets, and basically it publishes the paper. On the other hand, data science explores many models, build the models, and on the basis of the data and their insights, tune the hybrid model. It also understands the empirical properties of the models and develop use tools which can handle the big data, or you can say that is the massive data sets, and take the action accordingly. The Harvard Business Review also explore in their research article, that is the data is the new oil of the digital economy. So the next economy is basically based on the data. Now let us discuss about the machine learning. Machine learning, basically we thought about the humans. The concept is that is human learns from their past experience, and machine follow the instructions given by humans. But what if humans can train the machine to learn from their past data and could act much faster than humans? So this concept is known as the machine learning. On the other way, you can say that machine learning means machine learning from the data and making it intelligent so that machine can behave and mimic like the humans. It means machine is becoming intelligent through data and the algorithm. The concept is how it works. You can see here, machine learning is the science of making computers learns and acts humans by feeding data and information without being explicitly programmed. So here we have the past data, okay, and we can analyze, we can train the data and apply in the models and predict the behavior of that models. So you can get the output that is in the form of the patterns. Now, the other question arises, how traditional programming is different from the machine learning programming. So in the traditional programming, what we did, that is we apply the rules in the form of the algorithm or the programs, and then we can impute the data on the program and we'll get the answer. But in the other hand, machine learning, that is we have the input from the data, okay, that is you can see can say that that is the feedback, and we can impute the data and feedback, and our models will learn these feedback and the data and make the rules accordingly and predict the patterns. So that is the layer differentiate the traditional programming with the machine learning algorithms. So you can see the application area of data science and machine learning. That is, you can think about the robots. There are various movies already that is developed by the different directors from last 100 years before. So this concept is also made by the machine learning approach, or you can say that is the artificial and AI based movie. Okay, so these are the some movie we have collected the movie which is based on the AI
This concept is not new. That is, you can see the machine learning and AI concept is already started from 1927, and before that, the Metropolis, that is the German-based movie, which is based on the Maria robot, and then 1934, 1955, 1951, 1957, and so on. And we are in the age of the robotics engineering. And this concept is, we are using the machine learning and the artificial intelligence. Okay, so these are some of the list of the movies which is based on the AI technology, or you can say the data science, or you can say the mathematical models and learnings. So these are the list of the movie which is based on. On the same way, that is Alan Turing, which is the father of the modern digital computers, and it was said that machine can think and mimic like humans. This concept is given in the 1936, and it is the current scenario. You can see we are seeing the number of robots, number of movies, and which is based on the artificial intelligence technology. The Alan Turing, which is a great mathematician, great computer scientist, and that's a good human being, that is developed the Turing test, that is, which say that the Turing test is a method of inquiry in the artificial intelligence for determining whether or not a computer is capable of thinking like human beings. So this test is known as the Turing test. The test is named after Alan Turing, which is the founder of the Turing test, and English computer scientist, cryptoanalyst, mathematician, and a theoretical biologist. And that is no a computer has passed this test till date. Okay, so it is the basically a 3-person game in which a computer uses the written communication to try to fool a human interpreter into thinking that it's another person's. Despite major advances in artificial intelligence, no computer has ever passed the Turing test till date. So on the basis of these concepts, we have collected the movie which is based on the artificial intelligence. So you have a look, please. AI, or artificial intelligence, is becoming a major buzzword in recent years. Knowing what it is and its practical applications in real life in the upcoming future leaves us stunned. Although no distance to exaggerate AI to dramatic effect, there is still some truth in these movies. There are AI experts who fear a super intelligent AI could outsmart us and eventually decide to wipe us off the face of the earth. On the flip side, AI is depicted as a miracle invention. These intelligent machines can perform analytical tasks such as simulations and predictions much better than humans. So if you're interested in AI, you should check out our top 5 AI movies list that you should never miss watching in life. But before we begin, if you're new here and haven't subscribed already, make sure to hit the subscribe button and the bell icon for interesting tech videos every day. Now let's get started. At number 5, we have Ex Machina. Ex Machina is one of the best examples of an AI movie. It covers all the bases, allowing the protagonist to be a proxy for the audience to explore AI's moral arguments, while also deploying a thriller narrative arc to hook the audience in. The film follows the story of a programmer who is allowed to be a part of an experiment to evaluate the capabilities of a highly advanced humanoid called Ava by his CEO. He is the first person to meet Ava, and his goal will be to test whether Ava passes the Turing test. What happens next carries the storyline forward and captivates the viewers in the process. The movie focuses on how we interact with AI as humans and how a machine could in turn manipulate humans. This movie is phenomenal and definitely do not miss.
At number 4, we have the 1968 sci-fi classic 2001: A Space Odyssey. This movie is perhaps the most intricate and ambiguous movie on our list. The Stanley Kubrick masterpiece revolves around time, space, human nature, and evolution, and the film is narrated in a non-linear direction with inexplicable consistent context. The film opens millions of years ago in a desert with apes discovering a giant black hole. Under its influence, the apes then begin using bones as weapons. Then the film transitions to a space voyage to find the origins of the mysterious monolith in the far reaches of the galaxy. The spaceship functions are controlled by an artificially intelligent computer named HAL, which claims to be foolproof and incapable of making errors. However, during their space mission, the ship's crew gets double crossed by HAL. When the error HAL makes an odd error, the astronauts decide to disconnect it from the ship's controls. But HAL, however, discovers that आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल next, we have Metropolis and आवाज नहीं आ रही इको बहुत है हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही है? नहीं आवाज नहीं आ रही इको आ रहा है हाँ, इको कुछ प्रॉब्लम है। हमारे पास आपके उधर है क्लियरिटी अच्छा, नहीं आपकी अभी आवाज आ रही है a class conflict. Frederick Franklin, a member of the wealthy class, falls in love with a working class. He also his plan and his relationship with Maria, Frederick's father, and scientists create a rewarding Maria's image. Within the context of the film, Robert Maria seems to have its own mind that causes rebellion within the working class and eventually attempts to destroy Metropolis. With the massive popularity of Metropolis, the robot Maria stands as the first significant robot in the film industry. And for the first film ever of AI, the storyline is absolutely incredible. It raises interesting moral questions about the loss of the human likeness of AI-based robotic creations. Moving ahead, we have Her at number 2. This movie highlights emotional intelligence in the form of human-robot romance. This movie reveals the direction humanity might be headed if artificial intelligence continues to evolve. The main lead of the film doesn't know what he wants to do after being pushed to the verge of divorce. This life takes a place of the film when he begins to find peace in the voice of his computer's new operating system, Samantha. The heartfelt conversations with the AI system, Samantha, makes him fall in love with her. Despite its advanced setting, the idea of this movie is alarmingly genuine, and therein lies its brilliance. Given our dependence on innovation, AI-like assistants, and virtual realities, we may soon witness relationships between devices. They're engaging, entertaining, yet sad. Last on the list is Pixar's masterpieces and one of the thought-provoking movies, WALL-E. WALL-E is an excellent contrast to other AI killer robots shown in films. WALL-E is the last solar-charged robot left on Earth. He spends his days finding out the mess the humans created before leaving the planet Earth, one piece of garbage at a time. Yet, during 700 years, WALL-E has developed a character, and he's terribly sad at the end. Then, at that point, हेलो हेलो हेलो, कुछ है हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए So these are the some example of the AI based. That is the example of the AI based movie, which we can see that is what are the impact of the machine learning algorithm and data science capture in our lives. Okay, so these are the some example of the AI based movie which capture the emotion of the humans
and their capitalization in the real life. So now let us discuss that is the another concept, that is the deep learning. So artificial intelligence, machine learning, and deep learning algorithms are coincides with each other, where the artificial intelligence is on the big umbrella, and after that we have to the machine learning and the deep learning concepts. So the normal questions arises, that is, what is the basic difference between these three terms, that is the artificial intelligence, machine learning algorithms, and the deep learning algorithms. Basically, the artificial intelligence is nothing but the engineering of making the intelligent machines and their programs. While on the other hand, machine learning is the ability to learn without being explicitly programmed. That is, you can say that it is based on the data, and the data is manipulating the intelligence. On the other hand, we can see that is the deep learning concept, which is based on the deep neural network, which is basically inspired by the human brains. So we can say that that is the deep learning is a subset of machine learning, which in turn is a subset of artificial intelligence, and that is the common way of illustrating how they are related is a set of the concentric circles with AI on the outside and deep learning at the center of the artificial intelligence. So in this way, the AI is the larger overarching concept of the creating machines, which simulates human intelligence and the thinking. Machine learning, on the other hand, is a practical application of the AI that is currently possible, being the limited memory type. And by and large, machine learning is still relatively straightforward, with the majority of the machine learning algorithms having only one or two layers. But on the deep learning, we have the unlimited number of layers. Okay. So machine learning models are able to improve over time to time, but often need some human guidance and retraining. In contrast, we can say that is deep learning has a multiple layers, and these extra hidden layers are processing, which gives the deep learning its name. Deep learning algorithms are essentially self-training, in that they are able to analyze their own predictions and results to evaluate and adjust their accuracy over time period. Deep learning algorithms are capable of independent learning and is able to, through a layered algorithms, which together make up the referred to artificial neural network. So these are basically inspired by the neural networks of the human brain, but obviously fall far short of achieving that level of sophistication that is significantly more advanced than the simpler machine learning models, and are the most advanced AI systems we are currently capable of building the models. It has various process. That is, we can see that that is the reasoning process, which this aspect of AI programming focus on the choosing the right algorithm to reach the desired outcome. And the next one process is known as the self-correction process. With this aspect of AI programming is designed to continually fine-tune algorithms and ensure they provide the most accurate result possible. I have asked the questions from the OK Google. We all know that is the Alexa, OK Google, and other things are working through the data science protocols. So machine learning is the scientific study of algorithms and statistical models, which computer system use to effectively
perform a specific task without using explicit instructions, relying on models and inference instead. So this definition is we have taken from the Google translation, that is OK Google. So the formulation comes from the data science concept. Now let us see how the machine learning algorithms work, how to analyze the patterns, how to build the models using the data science approach. So here you can see that is the we have the huge amounts of data in our database. So we can gather the data and we can store in the database. Then we have to clean the data. Okay, clean, that is, we can see that is the data cleaning, we can say that is, or we can say that is the data pre-processing. After pre-processing, we can choose the model. There are various models available, and these models are dependent upon the applications, which applications you are imposing on the data. Then you have to train the model. Which model you have to choose? You have to train that model, and after that you can test the model as well through the data. Okay, and if it is okay, if it is not okay, then you can tune the model. If it is okay, you can process the data. So after testing the data, you have to tune the model, and after that you can impute the data on the model, and you can predict the nature of that problems. So this is the process which is involved in the machine learning algorithms. So in simple terms, that is, we have already discussed these things. So we are getting the data from where? We are getting the data in the form of a numerical data. It could be the image data in the form of pixels. It could be the video data, that is in the form of frames per second. It could be sound data in the form of waves. It could be text data, that is, you can see from Twitter, you can get on tweets, you can get from the comments, you can get from the marketing feedback, and so on. So these are the some inputs where you can apply these types of data into the previous models. You can see that is in this model. So you can impute this data in the form of the process. Now, how the model learned from the data? You can see here we have the input samples. You can impute the input samples. Then you can give 80% of data for the training and 20% of the testing. And then after that, your model will be trained. And then after training the models, you can impute the testing process. You will get the that is the pattern of that model. So you can predict using the different approach using the machine learning models. So let us see what is the training and testing data. We have used the term training and testing. So in machine learning, data set are split into two subsets. You capture the data in a whole set, but you have to divide the data into the two sets. First one, that is the training data set, and another one is for the testing data set. The first subset is known as the training data. It means that is a portion of our actual data, which is fed into the machine learning models to discover and learn the patterns. In this way, it train our model. Okay. The other subset is known as the testing data. So training data is a set of samples. That is a collection of photos, videos, set of test, audio files, etc., as we have already discussed, which assign the relevant and comprehensive labels. So you can categorize in the form of the class or tags, and to fit the parameters, that you can assign the weights of a machine learning models
with the goal of the training it by the examples. So these are the categorized into the two subsets, that is the training and testing sets. So here we have, you can see that is we have the full data sets. So we have categorized, this is the pictorial representation which just we have discussed. This is the full data set. We have to categorize into two formats, that is the training set and the testing set. And training set is again categorized into the two formats, that is training set and the validation test. And after that, we have to go the open source, internet, artificial data generation. We are getting the data from these sources. Now you can see here that is how it categorized. There are various classification algorithms. That is, you can see that is here the universal set. That is, which is, you can say that is the unobserved data. Then you can categorize into the two pools. Okay, that is training set. On the same way, we have two testing set. That is practical usage. So that is the unobserved data. That is also the unobserved data, and we have categorized into the two pools. So training is the process basically of making the system to able to learn. That is no free lunch rule. So training set and testing set come from the same distribution and need to make some assumptions or biasness. So we have categorized into the different format according to the applications. Now, the machine learning algorithms has three types. That is, you can say that is the supervised learning, unsupervised learning, and the reinforcement learning. Supervised learning means that the data sets are labeled. Normally, what we are getting the data from the various channels. These are the unsupervised data, you can say. So we have to supervised learning approach. We can capture the data and we have to text, or you can say that is labeled, so that the patterns can be detected and used to label into the new data sets. And in the unsupervised learning, data sets are not labeled and are sorted according to similarities or the differences. Now, the third algorithm is known as reinforcement algorithm. Reinforcement learning, you can say that is a reinforcement algorithms means data sets are not labeled, but after performing an action or several actions, the AI system is given feedback. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम कहीं पे जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है कि बिजनेस पर्सन्स क्या करते हैं कि हमको फीडबैक के लिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसके आधार पर वो कैटेगराइज करते हैं और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं. तो सेम फॉर्मेट हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट उसी प्रकार है कि हम फीडबैक के थ्रू अपने मॉडल को ट्यून करते हैं. यहाँ we can see that is we have the what are the algorithms, how it works for the supervised algorithms. You can see that we have the raw data, then we can annotate them, then input process data, then we can apply the algorithm, then process, then we can the output. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, रॉ डेटा में बहुत सारी चीजें हैं. इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको कैटेगराइज करके ये एल्गोरिथम अप्लाई करके हम सब इसको डिफरेंट कैटेगराइजेशन में लेबल्ड कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर द प्रोसेस. कंप्यूटर अपने आप कुछ भी नहीं करता, जब हम उसको बताते हैं तभी वो करेगा. तो ये मशीन लर्निंग का प्रोसेस है. यहाँ पे सेमी सुपरवाइज्ड में हम क्या करेंगे, दैट इज हियर वी हैव द सेम प्रोसेस. Here we have the raw data, then we have to interpret, then annotate the data, then apply the algorithm, then process, then we can get the bifurcations. In the same way, that is, we have the unsupervised learning. We have the input raw data, then interpret them, apply the algorithm, process the data, and we'll get the patterns. And here you can see in the reinforcement algorithm, we have some different algorithms. That is, we have the input raw data, then we have here the reward. Okay,
Here we have the reward, that is the feedback, you can say. Okay, that is the good or bad. The reward position is here. We have the state, we have the assent, we can apply the environment and take the action accordingly. Okay, then we can categorize this one. So these are the methods how to apply the supervised learning, semi-supervised learning, unsupervised learning, or the reinforcement learning algorithms on the machine learning patterns. So here we also have the different categorization. We have in the supervised learning, we have the discrete and continuous approach. That is, you can see that is classification or categorization. And in the continuation, we have the regression analysis approach. Here we have in the unsupervised, that is clustering method, and the dimensionality reductions approach. So these are the machine learning problems. In the clustering strategy, we have a different method, that is k-means algorithm, agglomerative clustering, mean shift clustering, spectral clustering. So these are the some clustering approaches. And in the same way, we have the different learning framework for the representation of the image. So we can apply the same patterns and we can train the system accordingly, and we can identify the methods, that is, which is apple or tomato or cow or the human face recognition and so on. So these methods are basically works on the method which just we have discussed. Okay. So these are the some mathematical framework, that is y equal to function of x. That is training and testing functions we have formulated. Okay, so f is the prediction function and x is the image feature and y is the output. So we can apply the mathematical model and apply the algorithms, and we can get the predictions accordingly. That is the predicted value is y here. So these are the some examples of the machine learning algorithms. I think I have a very less time left. So these are the some classifier algorithms, training and testing. Okay. These are the many classifier algorithm is available for the data science and machine learning, that is support vector machine, neural networks, name-based algorithm, Bayesian network, logistic regression, randomized forest, boosted decision tree, k-nearest neighbor, and restricted Boltzmann machine. And this is not limited, that is many models are available, and it depends upon the application which models you can choose. So no one is the best, it depends upon the application where you can apply which model perform the better. So these are some examples. These are the bias variance trade-off, that is mean square, noise square plus bias square plus variance. We can apply to reduce the error on the model. So we can apply these algorithms. So these are the some example of the nearest neighbor classifier. That is Voronoi partitioning of the feature space. That is for, you can apply for the 2D and 3D data. This is the classifier where we can use the logistic regression for the maximize the likelihood of the label. That is log of px1 x2, and we can categorize the voice of the male and female. We can identify. So these are the some comparison of the various learning objectives and training inference. These are the mathematical formulation, how to
how to apply the these weights into the algorithms. Then we have the L1 norm and the L2 norms. We can apply for the ridge regression and the lasso regression models. These are the some equations where you can apply the cost functions. Then regression analysis, and finally we have these methods have very marketing analytics. You can apply the speech recognition. You can apply the AI in the different learning approach. That is, you can say that is, if you are speaking English and you don't know Japanese, then it can convert into the different domain in the same domain. So this technology is a hologram technology, you can say that. So you can see a video which is based on the hologram technology, how it convert the Japanese to English or English to Japanese. So please have a look for a video which is based on here in Las Vegas to present to you. Now, I've been invited to give keynotes across the globe. And while it's easy for me to be here in Las Vegas, it doesn't always travel across the world. And even when I do, I always speak the local language. Thank you, Mishra ji. Either language or distance matters for me to deliver a fantastic keynote. What if technology can help me be anywhere I need to be and speak any language I want to? Well, it can. We are bringing together the power of mixed reality and Azure AI services to create a truly game-changing experience. What you're about to see is an exact hologram of me wearing the same outfit that we recently captured at a mixed reality studio. And I don't speak Japanese, but what if I wanted to deliver my keynote in Japanese? Using Azure AI technology, I can translate my English into Japanese and train it to sound exactly like me. The same voice tones, those same inflections. Now we brought this together, my hologram and Azure AI, to show you what's possible. So first, I'm going to put on my HoloLens 2 here, and then we'll flip in the room to a special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect holograph. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram so natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote. Hello. 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 Thank you. आवाज आ रही है मिश्रा जी? हाँ आ रही है. Thank you very much. Okay, thanks. Next. Any questions from the audience, please? Any question? Any questions? No. Okay, thank you all. Our next speaker, Dr. S.K. Tiwari in Gujarat. Topic of the speaker, analytic function and singular point for complex valued function. I request deliver to lecture. तिवारी जी आवाज आ रही क्या?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो। हाँ आई एम सर आ ऑडिबल? गई आवाज। ओके ओके, थैंक यू। Okay, so good afternoon to all of you. I Shrikant Tiwari. Lakdeep. Now, okay. Good afternoon to all of you. I Shrikant Tiwari. As an assistant professor, क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहले सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श और साथी मित्रों को नमस्कार। एक्चुअली मैं इसी महाविद्यालय का छात्र रहा हूँ, मॉडल साइंस कॉलेज रीवा का, और हमारे जो गुरु जी हैं वो डॉक्टर डी.पी. शुक्ला सर हैं और हम सब के बीच हैं। So today I discuss the topic analytic function, singular point and their type. So first I will introduce what is the complex number and how to come complex number. तो सबसे पहले हम बात करते हैं algebraic equation. Suppose x square plus 1 equal to 0. ऐसे इक्वेशन जिनको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आती है। जरूरी नहीं है कि वो सभी वैल्यू रियल नंबर सिस्टम में बिलोंग करती हो, बट कुछ ऐसे नंबर सिस्टम हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यदि हम पुट करें एक्स की वैल्यू जो आएगी वो रियल नंबर सिस्टम में बिलोंग करती है। बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज आइदर पॉजिटिव or 0. But we feel to necessity to extend the system of real number. Euler was first to introduce the symbol iota for the square root of -1, that is I square equal to -1. It was C.F. Gauss who first proved in a satisfactory manner that every algebraic equation with real coefficient has coefficient root of the form x plus iy. The real root being particular case of complex number for which is the coefficient of I 0. Means a number which has the form z equal to x plus iy is called a complex number, where x and y both are real numbers and I is called imaginary unit with property I square equal to -1. The symbol z, which can stand for any complex number, complex variable, x is a real part of complex number denoted by real part of z, that is REZ. And similarly for y is imaginary part of complex number denoted by imaginary part of z, and
symbolically I am Z. The set of all complex number is denoted by C. This is a simple definition of the complex number. Now we start function of complex variables. तो इन जनरल हम लोग जो रियल वैल्यूड में फंक्शन डिफाइन करते हैं वहां पे ये कहा जाता है कि दो सेट के बीच एक ऐसा रिलेशन जो फर्स्ट सेट के सभी मेंबर की यूनिक इमेज दूसरे सेट में रखती हो। कुछ ऐसा ही यहां पर है बट कुछ अपडेटेड है। लाइक let A and B be two non-empty subset of C, that is complex number. A function f from A to B is a rule which assigns to each z0 equal to x0 plus I by 0 belong to A. There corresponds a unique elements w0 equal to u0 plus iv0 belong to B. The number w0 is called the value of f at z0, and we write w0 equal to f of z0. If z varies in A, then w equal to f of h varies in B. We say that f is a function of complex variable in A. The generalization part of the function, if w take only one value for each value of z in A, means A के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग B में एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करे, then W is called single value, that is the uniform function of Z. Otherwise, it is called multi-valued function of Z. For example, f of Z equal to Z square, this is single value, and f of Z equal to Z power half, that is the plus minus square root REI theta by 2 is known as multi-value. यहां पर हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो जेड स्क्वायर के लिए जब हम 360 डिग्री मूव करेंगे तो हमें एक ही पार्ट मिलेगा, जबकि जेड पावर हाफ में जब हम मूव करते हैं तो 180 डिग्री के साथ दो पार्ट में डिवाइड करेगा. सो नोन एज अ सिंगल वैल्यूड एंड नोन एज द मल्टी वैल्यूड. सिंपल डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन सेम एज द रियल वैल्यूड मींस a complex valued function f defined in a non-empty open set D is said to be differentiable or complex differentiable at z0 if the limit z tends to 0 f of z minus f of z0 upon z minus z0, that is limit h tends to z h tending to 0 f of z0 plus h minus f of z0 upon h, it is exist and unique. When this is the case, the value of the limit denoted by f dash z0 is called the derivative of f at z0. Let f of z equal to real part of z. हम जब देखते हैं कि इसको हम इस लिमिट में एग्जिस्ट कराते हैं तो यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है. So we can say f of z equal to real part of z is no differentiable. Yeah, nowhere differentiable. Whenever now we show in the same condition z square sin z z cube plus 3 all are the differentiable everywhere in C. The definition of analytic function. In other way, in simple way, we can say analytic function is same as the differentiable function, but in some updated form, like let f of z be a single valued function defined in a domain D, then f of z is said to be analytic or holomorphic or regular at a point z0 of D if it differentiable not only at z0 but also in some neighborhood of z0. Similarly, a single valued function f of z is said to be analytic on a domain D if it is differentiable at each point of a domain. In other words, या in simple words, हम किसी फंक्शन को एनालिटिक तब कहते हैं जब किसी पॉइंट के स्मॉलेस्ट नेबरहुड में के सभी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. हमने शुरू में ही कहा कि एनालिटिक कुछ और नहीं है बल्कि एनालिटिक डिफरेंशिएशन का ही जनरलाइज्ड पार्ट है, या डिफरेंशिएशन ही है.
जैसे हम कहते हैं कि माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एनी रियल नंबर x0, बट वी कैन डिस्कस इन कॉम्प्लेक्स वैल्यू नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो जैसे हम कहेंगे कि a function f of z is differentiable a smallest neighborhood of z0, then we can say f of z is analytic at that point. For example, sin nz, cos nz, z power n, and these are the analytic function in everywhere. So question that if function is not differentiable, that is function is not analytic, then that point is known as singular point. Like at point at which f of z fails to be analytic is called a singular point, a singularity of the function f of z. तो सिंगुलर पॉइंट एक तरह से क्या है, जिस पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी फेल होती है उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, a function which is fails to be analytic is known as singular point. For example, f of z equal to z square plus 3z minus 5 upon z minus 2 has a singular point, a singularity at z equal to 2 in the entire complex plane. हम देख रहे हैं कि यहाँ पर z minus 2 in the denominator, so at z equal to 2 limit of the function does not exist, and also the differentiability of the function at z equal to 2 does not exist. Like here, when we find the limit f of z minus f of z0 upon z minus z0 at z equal to z tending to 2, then this is does not exist. So we can say z equal to 2 is a singular point. This is the type of the singularity. The first type is the isolated. A point z0 is said to be an isolated singular point of a function f of z if there exists a deleted neighborhood of z0, which is defined as that, in which the function is analytic. Otherwise, it is known as non-isolated singular point. Means किसी फंक्शन कोई सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड कहलाएगा यदि उसके नेबरहुड में उस सिंगुलर पॉइंट के अलावा कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट ना करे. मीन्स a deleted neighborhood means a neighborhood of z0 such that such that 0 less than z minus z0 less than delta and delta greater than 0. सिंपल सी बात करें कि यदि हम एक रियल लाइन लेते हैं या कॉम्प्लेक्स ग्राफ लेते हैं और सपोज कोई पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो उस पॉइंट के अलावा उसके स्मॉलेस्ट नेबरहुड में कोई दूसरा पॉइंट या दूसरा सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट ना करे, ऐसे सिंगुलर पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोलेटेड. और यदि ऐसा नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. फॉर एग्जांपल्स, f of z equal to z plus 2 upon z into z square plus 2, then f of z is analytic everywhere except z equal to 0 and z equal to plus minus square root 2i. These singular points are isolated because for each singular point there exists a deleted neighborhood must be exist which do not contain any other singular points. For example, आप एक लाइन खींचिए और सपोज 0 is the origin point and plus minus root 2i in the y-axis, root 2 and minus root 2. तो माइनस रूट 2 के लिए भी एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा उसमें 0 एंड रूट 2 शामिल नहीं होगा. ऐसे 0 के लिए एक ऐसा नेबरहुड बना सकते हैं जिसमें रूट 2 और माइनस रूट 2 शामिल नहीं होगा. सिमिलरली रूट 2 के लिए भी आप ऐसा नेबरहुड बना सकते हैं कि वहां पर अदर सिंगुलर पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा. तो इसलिए ऐसे सिंगुलर पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोलेटेड. और यदि ऐसा कर पाना पॉसिबल ना हो उसको हम बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड. For example, the function f of z equal to cot pi y z. Cot pi y z is not analytic at the point where tan pi y z equal to 0. Means cot pi y z is the function and 1 upon tan pi y z
equal to cot pi y z. So when tan pi y z equal to 0, then the limit of that function does not exist, and also it is not differentiable. When tan pi y z equal to 0, tan pi y z equal to 0, that is at the point pi y z equal to plus minus n pi, that is z equal to plus minus 1 upon n. So for natural number, for integer n, such that for n equal to 1, 2, 3 up to so on, thus f of z has infinite number of isolated singularity or singular points at z equal to this, as there is no other singularity in their neighborhood. Means हम जैसे n equal to 1, 2, 3, 4 कुछ भी लेते जाएंगे तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 and up to so on, these are the isolated singular point. लेकिन हम इसको जितना large बढ़ाएंगे, when n is large, the origin z equal to 0 is also a singularity. 0 equal to 0 भी एक singular point है, लेकिन but it is not isolated since every neighborhood of 0 contains singularity of the function. Hence 0 is non-isolated singularity of the function f of z. Means 0 के लिए ऐसा कोई भी neighborhood बनाना possible नहीं है कि उसके neighborhood में दूसरे singular point exist ना करें. And the other type of the singularity, removable singularity. Removable means name से ही clear है इसके कि यदि हम कोई ऐसा singular point है कि हम उसके वैल्यू को असाइन कर दें या चेंज कर दें तो वह रिमूवल सिंगुलरिटी उसकी रिमूव हो जाए. मींस एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट z0 is said to be removable singularity of the function f of z if we can remove the singularity of f of z after assign a suitable value of the function f of z at singular point. In other words, if all the term of the obtained in the principal part of the Lorentz series about an isolated singular point z0, then it is known as removable singularity. For example, if f of z equal to sin z minus 5 upon z minus 5, z not equal to 5 and 0 when z equal to 5, then z equal to 5 is a removable singularity. If we assign the value of function f of z at z equal to 5 is 1, यदि ये 0 को हम 1 रिप्लेस कर दें तो z equal to 5 हमारा सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा. तो ऐसे सिंगुलर पॉइंट को हम रिमूवल सिंगुलरिटी बोलते हैं. यदि किसी कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम रीअसाइन कर दें तो वह सिंगुलरिटी वर्ड ही वहां से हट जाए, इसलिए इसका नाम है रिमूवेबल सिंगुलरिटी. एंड द पोल a singular point z0 is said to be pole of the function f of z if there exists a positive integer n such that limit z tending to z0 z minus z0 power n f of z exists but non-zero. Means ऐसा भी suppose a function f of z equal to z square upon a plus 5 upon this, तो हम ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कराएंगे जैसे then z equal to 2 is a pole of order 3 and z equal to 1 minus 1 are pole of order 4. Means जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि z minus z0 power n f of z, इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो बट नॉट 0 हो. तो यदि हम z इक्वल टू 2 के लिए बात करें तो z माइनस 2 पावर 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वह नॉन जीरो बट फाइनाइट वैल्यू होगी. मींस z इक्वल टू 2 या पोल ऑफ ऑर्डर 3 और a pole of order 1 is known as simple pole. And the other example जैसे function f of z can be defined z minus z square minus 2z plus 3 upon z minus 2, which can be separate this. So z equal to 2 is a simple pole, that is pole of order 1. And similarly, these are the simple pole at z equal to this and this. Essential singularity. A singular point is said to be essential singularity if it is neither a pole not a removable singularity. So this singular point, ऐसा singular point z0 is said to be essential singular point of the function f of z if it is neither a pole not a removable singularity. In other words, if the principal part of the Lorentz series, हालांकि यहाँ पे मैंने Lorentz series के बारे में बात नहीं किया, तो बेसिकली जब हम किसी फंक्शन को सिंगुलरिटी निकालते हैं तो Lorentz series के हेल्प से भी निकालते हैं. उसमें दो पार्ट होता है, एक एनालिटिक पार्ट होता है और एक प्रिंसिपल पार्ट होता है. तो प्रिंसिपल पार्ट
में f of z z0 contains infinitely many terms, then z0 is called an essential singularity of f of z. Also, if essential singular point is isolated, then it is known as the isolated singular points. Otherwise, it is known as the non-isolated singular points. For example, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir, बोले. Yes, sir. एक मिनट लास्ट में. Singularity at infinity. The type of singularity of the function f of z at z equal to infinity is the same as the f of 1 upon w at w equal to 0. The function f of z equal to z cube has a pole of order 3 at z equal to infinite, since f of 1 upon w equal to 1 upon w cube has a pole of order 3 at w equal to 0. Similarly, for the function f of z equal to e power z sin z and cos z has an essential singularity at infinity. And sir, thank you, sir. For any question? Okay, thank you, sir. Thank you. नमस्कार डॉक्टर शुक्ला जी, नमस्कार आपके आमंत्रण के लिए और न्यू साइंस मॉडल साइंस कॉलेज रीवा मेरे लिए मैं आवाज सुनाई पड़ रही सबको? क्लियर है आवाज? हाँ जी। तो सबसे पहले मैं नीलम शुक्ला मैडम को भी नमस्ते कहना चाहूंगा। नीलम पांडे जी मैडम है बैठी? नीलम पांडे, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ सर नमस्कार। मॉडल साइंस कॉलेज रीवा से गणित से मेरा पुराना संबंध रहा। आपका निवेदन था कि सर ज्वाइन करें, तो मैंने कहा मुझे ये अच्छा लगा। और मुझे यहाँ पर ओम प्रकाश गुप्ता जी दिख रहे हैं। नमस्कार गुप्ता जी। हाँ भाई गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, बहुत दिनों बाद और मैंने सही बात है। तो मैंने कहा चलो ज्वाइन करते हैं और पुराने लोगों से एक बार याद भी हो जाएगी। आ जाओ एक बार रीवा, है ना, बस बुला लीजिए, आ जाएंगे, उसमें क्या। आप इंदौर आओ घूमते हुए। अरे तुमको बुलाने में क्या दिक्कत है। शुक्ला जी बोले बुलाएंगे, तो हमने कहा ठीक है आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और अब ऑनलाइन तो जुड़ने लगे, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है कि अपन आए व्यक्तिगत रूप से रीवा, तो भी ऑनलाइन तो मुलाकात हो ही रही है। तो आज जैसा कि आप लोगों ने रामानुजन मैथमेटिक्स के ऊपर नेशनल मैथमेटिक्स डे के स्थान पर नेशनल से वेबिनार जो कर रहे हैं, वेबिनार तो खैर एक अलग स्थिति है, पर मैं पसंद करता हूं कि जब अपना ऑफलाइन मोड में हमारा सेमिनार हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और गणित के विद्यार्थी मेरा ख्याल है अधिकतर ज्वाइन है। तो मैं अपनी बात कहने से पहले कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूंगा जो हमेशा मुझे याद रहती हैं। डॉक्टर एनपीएस बाबा साहब का जो एक सानिध्य और रीवा साइंस कॉलेज मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से जो मेरा लगाव था, तो उनकी बात हमेशा याद रहती है। और उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया, उस आधार पर ऐसा लगता है कि गणित में यदि कोई काम करना है तो मेहनत की हमें आवश्यकता है। आज के विद्यार्थी जो पहले मेहनत करनी चाहिए थी वो कम कर रहे हैं। इंटरनेट का जमाना है, नेट के ऊपर उपलब्ध सामग्री से अध्ययन करते हैं। वास्तव में होना ये चाहिए कि हमें लिखने का और साथ में उसको पढ़ने समय लिखने की जो आदत होती वो अब धीरे धीरे कम होती गई है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे विद्यार्थियों के लिए भी एक मेरा संदेश है कि बाबा साहब का एक रहता था कि हमेशा वो हाथ से लिखा करते थे, और लिखने से जो हमारे रिसर्च पेपर्स को एक मार्गदर्शन मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मेरे पास में अभी याद है कि उन्होंने मुझे एक 45 पेज का फिक्स पॉइंट थ्योरी के ऊपर हैंड रिटन मटेरियल दिया था, जिसको हमने फिर बाद में एक जर्नल में उनके नाम से उसको प्रकाशित किया था। और वो वास्तव में फिक्स पॉइंट का एक बेस था, जिसका कि चलन जो है आज के समय में 100 साल हो गए।
फिर बाद में मैंने यहाँ पे अपने आप को डाइवर्ट किया फजी लॉजिक के ऊपर, जो कि एक रिसेंट ब्रांच है गणित में। 1976 में लॉफ्टिफ ज़र्डे ने एक ब्रांच दिया, एक कोड दिया, और उसके आधार पर आज पूरे दुनिया में उस मैथमेटिक्स की ब्रांच ने अपना एक वो बना के रखा हुआ है। तो उस टॉपिक के ऊपर मैंने काम किया, और काम करने के बाद में आज स्थिति ये है कि मुझे उसमें काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, मेरा काम काफी आगे बढ़ा। तो मैं कुछ बातें ऐसी यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा जो इस कैसे मैथमेटिक्स में हम रिसर्च करते हैं और हमारे लिए किस तरीके से नए आइडियाज आते हैं। तो वो बात मैं कहना चाह रहा था। तो सबसे पहले शेयर तो मैं करूंगा अपना स्क्रीन, और उसके साथ में जैसा कि मेरा टॉपिक है यहाँ पर आपको सामने, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। हेलो हेलो, ओके ओके नो सर। ओके ओके, आज शेयर, ओके शेयर, प्रेजेंट, एक सेकंड, शायद मेरा ख्याल है कि स्क्रीन शेयर हो नहीं। विंडो में कैंसिल, ओके। चलिए, स्क्रीन में आने के बाद शेयर तो हो रहा है, आवाज तो आ रही है ना? हाँ, अरे 1 मिनट बोला था अंकित। सर आपका ऑडियो म्यूट है।
हेलो, हाँ, यस सर, आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ, ठीक। तो मैथमेटिक्स की जनरली सर बाबा साहब अपनी शुरुआत करते थे, बात वहां से मैं करता हूँ कि मैथमेटिक्स की हमेशा दो ब्रांच होती है, एक होता है अर्थमेटिक और दूसरा होता है ज्योमेट्री। तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्री को वो कहते हैं अर्थ with numbers 0 to 9 digit and geometry deals with points. After the introduction of algebra, geometry turns into the coordinate geometry and arithmetic turns into the real analysis. यदि हम इस बात को कहें तो ये बात हमेशा ध्यान रहती है कि रिसर्च किस तरीके से होती है। उस आइडियाज को लेने के लिए ये महत्वपूर्ण था कि हमारी ज्योमेट्री किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट हुई। जैसे कि हमने कहा कि ज्योमेट्रिकल जो पॉइंट होता था एक्स यदि है तो उसको अपन ने रिप्रेजेंट किया एक्स और कोऑर्डिनेट एक्स वाई से, और हमारे पास में वो बन जाती थी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम क्या करते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ये करते थे। इसी तरीके से जो नंबर्स थे 0 to 9 ये डिजिट है, और ये डिजिट जो है पूरा अपना रियल नंबर सिस्टम बनाते हैं, और इस रियल नंबर सिस्टम से हमारे पास में जो सेट है वो बन जाता था रियल नंबर का सेट, और जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होता था उसको अपन सेट कहते थे। तो ये बात जो है वो मुझे हमेशा याद रहती थी कि उन्होंने ये कहा था कि हम इस तरीके से सेट को डिफाइन करते हैं। और जब बात आई, अभी शेयर हो रहा है क्या मेरा स्क्रीन? नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है। चलिए, हाँ, ठीक ठीक, ओके, चलिए, प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकली, तो मैं उसको देखता हूँ। तो जब इसको थोड़ा स्क्रीन को शेयर करो अपनी, हाँ अपनी, इसमें मैंने एक वर्ड की फाइल थी वो ओपन करनी, उस पे जरा कर। वो वर्ड की फाइल ओपन वो ओपन करने जब तक शेयर नहीं हो रही। कौन सी सर? इसमें मेरे जीमेल पे देखिए, जीमेल से डाउनलोड कर लेना, मैं डेस्कटॉप पे डाल उसको। ये जीमेल पे है, इसमें ये वाली, इसको डाउनलोड। हाँ, एक सेकंड, हाँ हाँ, बस बस बस, हेलो, हाँ सर, yes yes, that's opening, words, हाँ, yes sure, हाँ, entire screen we are presenting now, okay, ये प्रेजेंट एंटायर स्क्रीन, ये यहाँ से एंटायर स्क्रीन में आएगा। वर्ड की फाइल दिखा दो इसमें, यहाँ तो हो रहा है, ठीक है, शेयर नहीं हो रहा है इसमें एक्चुअली, है ना? इधर राइट क्लिक करके शेयर पे आता है, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, यहीं से आएगा, यहीं से आना चाहिए ना, ये आ विंडो का, हाँ विंडो का, ये विंडो का, अब ये वाली, ये वाली, हाँ हो गया सर। हाँ, यस माय, ओके ओके ओके, हाँ, ठीक ठीक, जस्ट अब हो रही सर? हाँ, yes, visible na? So here is the comparison of the fuzzy models and application in real world problem. This is my topic. So why the fuzzy models come in the knowledge? Fuzzy set, yes, just I explained that the concept of a fuzzy set is the extension of the concept of the crisp set. Crisp set means our general collection of the well-defined object is called the crisp set in general way we say. And the universal set X is defined by its characteristic function X from 0 to 1. Because the membership value or elements belong to the set is represented by 0 and belongs to set is represented by 1 and does not belongs to represented by 0 in a general set. While in a fuzzy set, domain X is defined by its membership values that is represented by the mu AX, and it is the collection of the membership values, that means the belongingness of any element in a set is known as the fuzzy set.
So this is the basic difference between our CRISP set, this is the collection of well-defined object, and the fuzzy set, which is known as the new concept given by the Lofty-Jade. And the membership function, that means if any elements belong to the fuzzy set A, that means it belong 100%, 0%, 10%, 20%, and that value is given by 0 to 1 closed interval. So the value represented by fuzzy sets is membership value, and it is the value is 0 to 1. It is 0 means 0%, 0.1 means 10%, 0.20 means 20%. So this is the belongingness graph of the any members, and in this same way the CRISP set is represented by 0 to 1, that is this. So this concept changed tremendous in the theory of mathematics. Your fuzzy set becomes a real number, there is a fuzzy topology, and so some fixed point theory is already developed in the field of a fuzzy matrix theory, and fuzzy matrix theory is again change the fixed point theory and topology, whatever may be. So, but here the application parts to solve the real world problem is the fuzzy set plays very important role. Some of know that the logic washing LG fuzzy logic washing machine comes in the market, and due to this mathematics theory there is the fuzzy logic washing machine. Am I audible, sir? Hello? 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 Sir, ठीक. Okay. Sir, okay. So on the basis of this, we find some basic models generally work in the fuzzy set theory. First model, which is based on the fuzzy set theory, that is on the matrix theory. Second model is based on the fuzzy relation map, and third model is based on the evidence theory. Because to solve any real world problems, we require some facts and some theory. But model which is based on the evidence theory require for the membership function or belongingness of any element in the set. The model based on the evidence theory, that means we require to prove existence of any things or any object or any things in our world by giving the evidence. Suppose I say this computer system is useful for me, so I have to present my evidence to prove that this computer system is very useful for me. But experts say this computer system, how is the important for me? He gives some evidence that the model or speed or whatever you require, according to your requirement, he gives the support or evidence. So it's a model based on the evidence theory. Suppose we have to use the LG washing machine. Washing machine functions on the basis of the evidence given by the ladies working or using the washing machines. Someone asked them which type of the detergent required to wash the woolen clothes. So generally they say the easy or whatever may be the liquid soap is very comfortable to use the to wash the woolen machine. जैसे उन्होंने कहा कि हमें यदि वूलन कपड़े धोने हैं तो हमें इजी जो है वो लिक्विड सोप जो होता है वो हमेशा उपयोग होता है. इस तरीके के एविडेंस को कलेक्ट किया गया. उसके बाद में हर एक कपड़ों को किस तरीके से कौन से डिटर्जेंट की जरूरत है, कितना उसको साफ करने के लिए हमें स्पिनिंग देनी है, कितना हमें उसमें गर्म पानी चाहिए, किसमें कितना ठंडा पानी चाहिए, ऐसे एविडेंस के बेसिस पर एक थ्योरी तैयार की गई. उस थ्योरी के बेसिस पर जब मॉडल तैयार हुआ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करके एलजी वॉशिंग मशीन बनाई. और एलजी ने वॉशिंग मशीन जो बनाई उसमें फजी लॉजिक का यूज करके, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को दिया था तो इसलिए उसका नाम भी फजी लॉजिक वॉशिंग बना. तो इस तरीके की जो फजी मेजर थ्योरी आई थी तो उस पर बेस्ड भी कुछ मॉडल बने. तीसरी बात, चौथा मॉडल था फजी लॉजिक के बेस पर. फजी लॉजिक मींस इफ देन की कंडीशन के ऊपर. हमने कहा कि किसी चीज के लिए हमें ये कंडीशंस चाहिए और उससे हमारे आउटपुट क्या निकलेंगे. तो इनपुट और आउटपुट के बेसिस पर जो मॉडल काम करते थे उनको हम फजी लॉजिक मॉडल्स कहते हैं और ये फजी कंट्रोलर्स की तरह काम करते हैं. और पांचवा जो है मॉडल जनरली थ्योरी में पाया गया है, मॉडल बेस्ड ऑन द फजी ग्राफ. तो ग्राफ के ऊपर भी हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि पॉइंट्स जो होते हैं नोड और उसके बाद में एजेस जो होती है उनकी
वेटेज जो दिया जाता है वो उनकी बिलोंगिंगनेस या मेंबरशिप के थ्रू दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मॉडल्स थे जो हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, उनमें से ये 5 प्रकार के मॉडल्स जो इस फजी सेट थ्योरी में रिसर्च में अभी तक पाए गए हैं, जिनका की अध्ययन करने के उपरांत मैंने कुछ मॉडल्स जो है यहाँ पर किए हैं। तो टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन अबव मेंशन मॉडल, only I today explain one model that is based on the fuzzy set theory, that is based on the matrix. Generally, metric theory and matrix. Matrix means the arrangements of elements of any set in row and column is called the matrix. So here we say that the matrix theory is work on the basis of this model, and here matrix how work that I explain here. Generally we say arrangement of the crisp set into row and column is called the matrix. Similarly, arrangements of the elements of the fuzzy set in row and column are called the fuzzy matrix. Here this is the basic difference between the fuzzy matrix and the ordinary matrix which we use in our crisp set theory. So how this fuzzy matrix work? Suppose a fuzzy set A, here fuzzy set A having the membership element 1 has 0.2, element 2 has 0.5, element 3 has 0.8, and element 4 has a 1. So if we arrange this set, fuzzy set A, into the form of a matrix, we arrange this into the 1 by 4, 2 by 2, 4 by 1, whatever we require the dimension as per the numbers of the elements in the fuzzy set in the form of a 2 by 2. But we write here first value, that is A11 is 0.2, second is A12 is 0.5, third A13 is A21 is the 0.8, and A22 is 1, that is the 2 by 2 matrix. Similarly, we can arrange all the fuzzy sets in terms of the matrix. Okay, so as we know, the matrix represents the relations between the two variable x and y. Generally, we know that the matrix represent the relations between the two variables x and y. So using these properties, researchers investigate models where the conclusion is obtained with the help of the two variable. Because in general, in our real world problems, we say that there is the two variable. Suppose in the diagnosis system, one can go with the doctor and he asks his problem in the terms of the symptoms. दैट मुझे एक बहुत बुखार है सर, मेरे को सिर दर्द है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको हो सकता है कि ये बीमारी हो, आपको वायरल फीवर होगा, आपको सर्दी जुकाम होगा, या कभी हमने कहा कि मेरे को चक्कर आता है, मुझे हेडेक हो रहा है, कुछ इस तरीके से। तो जो हम सिम्टम्स बताते हैं तो उसके बेसिस पर डॉक्टर जो है डायग्नोस करता है। बट मेडिकल साइंस में क्या होता है कि जब हम कोई सिम्टम्स बताते हैं तो एक डॉक्टर बोलता है कि नहीं आपको ये प्रॉब्लम होगी, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो दूसरा बोलता है दूसरे ओपिनियन होंगे। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है। अब इन ओपिनियंस के बेसिस पर पेशेंट जो है वो परेशान होते रहता है। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशंस में, यहाँ पर हमने एक मॉडल बनाया है, जिस मॉडल के थ्रू पर मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम में उसको अप्लाई किया और इस एप्लीकेशन से एग्जैक्टनेस दी जो डॉक्टर्स के बीच में एम्बिग्यूटी होती थी किसी भी सिम्टम्स को लेकर के डायग्नोसिस को। So this is the basic model which is given by the Sanchez in 1995, and this model how work I here explain. This model he explained here, set of symptoms, that is the crisp set of all symptoms appear for the particular type of the diagnosis. Second, set of all disease, possible disease. If we find some symptoms in the patient, then there are the so many types of the disease possible. First, say and P is the set of all patients. So here we have the three set S, D and P. My screen is visible, sir? Okay, Shukla ji? Hello? Yes. So here in symptoms of the diabetes cases, we consider that S1, S2, S3, S4 and S5. Consider. First set, suppose S1 say for hello? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है ना, क्लियर है? यस, ओके। सो हियर यस, हियर S1 fatigue, weight loss,
polypsia, polyuria, irritation, extreme lethargy, weight around waist, high triglycerides, and this set of symptoms observed in the diabetic patient. Second types of the system, polyphagia. S3 denotes the nausea, vomiting, dehydration, abdominal pain, and low blood pressure. Fourth system set of collection of the symptoms we consider represent the loss of appetite and increased heart rate, and S5 denotes the swelling of legs, puffing, around eyes, high blood pressures, and bleeding वगैरह so on. And S is the blurry vision, retinal swelling, and leaking blood vessels. This six sets we consider for this model, but here we say that there are the four types of the diabetes will be given in the medical system. D1 is the represent to diabetic general. D2 denotes the diabetic ketocytes, and D3 represent the diabetic nephropathy, and D4 is diabetic retinopathy. So 4 types of the diagnosis was observed from the above version set of symptoms S1, S2, S3, S4. So there is a relations between the set of symptoms and the diagnosis. So these relations predict in a patient how severe is this diagnosis 1, diagnosis 2, diagnosis 3, diagnosis 4. So that severity represent in the terms of the percentage. But when the patient, जैसे पेशेंट कभी डॉक्टर के पास जाता है तो अपने सिम्टम्स कैसे बतलाता है, सर मुझे बहुत सिर दर्द है, मेरे को बहुत नींद आती है, मुझे बहुत थकावट होती है, या थोड़ी थोड़ी थकावट है, थोड़ा थोड़ा बुखार आता है, यानी वो कुछ लिंग्विस्टिक टर्म्स में अपनी बात कहता है. तो डॉक्टर्स उसकी जो बात है उसको परसेंटेज में पहले वो लगभग इसको कन्वर्ट किया जाता है. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो डाटाबेस के ऊपर लिया जाता है कि हमने कहा कि 100 पेशेंट्स गए, उनसे पूछा कि भाई आपको इस बीमारी में सिरदर्द कितने परसेंटेज था, सबने कहा कि बहुत, सभी ने. तो हम कहेंगे कि 100% वहां पर हेडेक जो है वो सीवियर है. तो इस तरीके की जो ऑब्जर्वेशंस है उसको हमने परसेंटेज और बिलोंगिंगनेस ऑफ द मेंबरशिप, दैट मींस 100% यानी 1 से रिप्रेजेंट किया. इसी तरीके से 80% है, 20% है. तो स्केल 0 से 10 लेकर के जैसे स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस करते हैं ऐसा करके अपन ने उनकी मेंबरशिप दी. और उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर 3 प्रकार के रिलेशंस डिफाइन किए हैं. फर्स्ट है पेशेंट्स वर्सेस सिम्टम्स. पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स है, दैट इज रिप्रेजेंट बाय P क्रॉस S, जिसको नाम दिया हमने रिलेशन S. दूसरा रिलेशन ऑब्जर्व, मतलब कि सिम्टम्स क्रॉस डिसीज, जो सिम्टम्स है उसके बेसिस पर उसमें क्या डिजीज हुआ, और RC यानी कंफर्मेलिटी रिलेशंस. ऐसे अपन ने तीसरा मैट्रिक्स बनाया जो सिम्टम्स और डिसीज के बीच में था. तो जो यहाँ पे 3 तरीके के हम रिलेशंस यूज कर रहे हैं, एक है RS जिसको पेशेंट वर्सेस सिम्टम्स कहते हैं, RO सिम्टम्स क्रॉस डिसीज, और RC जो है सिम्टम्स क्रॉस डायग्नोसिस. तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के अपन ने यहाँ पे जो इंडिकेशन रिलेशन दिए हैं, इनका नाम दिया है हमने RS मतलब सिम्टम्स जो पेशेंट्स में, RO का मतलब है ऑब्जर्व, और RC का मतलब है कंफर्म. तो ऑक्यूरेंस इंडिकेशन रिलेशन R1. अब जो RO है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका नाम दिया है ऑक्यूरेंस इंडिकेशन रिलेशन. मींस कि किसी भी पेशेंट में किसी भी डायग्नोसिस के होने की संभावना कितनी है, तो वो हमने कैसे ली है R1 से. इसी तरीके से R2 से क्या दिया है हमने, कंफर्मेलिटी, यानी ये रिलेशन क्या है, कंफर्म करता है किसी पेशेंट में. 2-3 मिनट का और समय में लूंगा. और तीसरा जो है R3 है, जो कि हमारा क्या करता है, नॉन ऑक्यूरेंस, मतलब कि उस पेशेंट में वो डायग्नोसिस जो है कभी भी नहीं होगा. और R4 जो है नॉन सिम्टोमेटिक्स नाम दिया है, जिसको कहते हैं कि उस पेशेंट में इस तरीके के डायग्नोसिस को लेकर के कोई भी सिम्टम्स नहीं है. तो इस तरीके से पूरे सिस्टम को मैट्रिक्स में हमने 4 तरीके से डिवाइड किया. पहला कौन सा लिया, ऑक्यूरेंस, दूसरा लिया कंफर्मेलिटी, तीसरा लिया हमने नॉन ऑक्यूरेंस, और चौथा लिया नॉन सिम्टोमेटिक. तो ये ऐसे 4 नाम दिए हैं जिनको हम R1, R2, R3, R4 और R के नाम से जानते हैं. ये फजी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा सिंपल मैट्रिक्स से थोड़ा डिफरेंट है. तो इस सब चीजों के कंप्यूटेशन के लिए हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम जावा में बनाया था, और उस जावा के प्रोग्राम के बेसिस पर यहाँ पर हम जो
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो पूरा करते थे, और असेसमेंट ऑफ द डायबिटिक स्टेजेस जो है इस मैट्रिक्स सॉल्यूशंस के थ्रू जो मैंने अपने मॉडल में निकाली थी वो यहाँ पर आपको सामने दिख रही है। 4 आपको मैट्रिक्स दिख रहे हैं सर? हेलो हेलो, स्क्रीन पे 4 मैट्रिक्स दिखाई पड़ रहे हैं? यस, हाँ, ठीक। पहला सर मैट्रिक्स दिखाई दे रहा R1 है, आप देखेंगे, पहला मैट्रिक्स R1 देखेंगे। ये मैट्रिक्स जो है यदि हम दिखाई दे देखें, रहा है। हाँ, इस पहले मैट्रिक्स में अपन देखें कि RS इंटू RO की बात मैंने की है। R1 इक्वल टू लिखा है RS इंटू R1। दिस रिलेशन 1 इज गिवन बाय द पेशेंट 1, 2, 3 एंड डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2, डायबिटीज टाइप 3, डायबिटीज टाइप ऑफ द 4। 4 टाइप्स ऑफ द डायबिटीज डायग्नोज किए गए पेशेंट में सिम्टम्स लेकर के। तो इनमें से हम देखें कि यदि हमारा जो ये R1 है इसको हम कहते हैं इंडिकेटिव ऑक्यूरेंस रिलेशन। मींस हमने कहा कि P3 में जो हमारी एनालिसिस थी यहाँ पर 1 बता रहा है P3 के सामने, D4 के नीचे। मींस हम यदि बात करें तो पेशेंट 1 जो है उसमें डायबिटिक 4 100% होने की संभावना है। तो डायबिटीज 4 जो है उसका नाम अपन ने क्या दिया यहाँ पर? डायबिटीज ऑफ द रेटिनोपैथी। यानी चौथे प्रकार की जो डायबिटीज है पेशेंट 3 में होने की संभावना 100% है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, यानी प्रेडिक्शन था। इसी तरीके से R2 जो है वो कहलाता है कंफर्मेबिलिटी, यानी कि कंफर्मेबिलिटी रिलेशन जो है वो भी हमारा इसमें 1 देता है। तो कहने का मतलब हुआ कि पेशेंट 3 के साथ में जो मेडिकल डायग्नोसिस था, ऑब्जर्वेशंस अपन कैसे लेते हैं जो वास्तव में एक डॉक्टर ने किया, और कंफर्मेबिलिटी जो रिलेशन हमने बनाया था वो हमारी जो मेडिकल डायग्नोसिस की थ्योरी है, थ्योरेटिकली ये कहता है कि यदि किसी पेशेंट में किसी सिम्टम्स की इतनी पॉसिबिलिटी है तो उसको ये होगा। तो इन दोनों का एनालिसिस करने के बाद में R2 जो है इस मॉडल से अपन ने बताया। R3 में यदि नॉन सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर जो पेशेंट 1 है उसके आगे D4 में 1 आ रहा है, तो ये कहता है कि इसको कभी भी D4 होने की संभावना नहीं थी, और P3 को जो है D1 होने का सिम्टम्स कहीं नहीं पाया गया। ऐसे अपन ने 4 अलग-अलग रिलेशंस इन 4 मैट्रिक्स में ऊपर उस मॉडल के एनालिसिस से निकाले थे। अब ये जो अंदर की बात है जहां पर हमने कंप्यूटर वर्क किया, ये सारा जो रिजल्ट है कंप्यूटर से एनालिसिस होकर के मिला है। पर उसमें बीच में जो थ्योरेटिकली पार्ट था वो हमने डाटा अंदर फीड किया है और उसके बेसिस पर ये मिला। तो अब वास्तव में क्या था कि पुराना मॉडल था, इस मॉडल में 4 मैट्रिक्स यूज में होते थे। अब इस मॉडल को मैंने कैसे मॉडिफाई किया ये बात में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर इसे आउटस्टैंडिंग अवार्ड दिया गया, और इस मॉडल का नाम हमने आरवी टेक्निक के नाम से दिया था। तो पहले मॉडल में हमने स्टेप में क्या की, जो R1 और R2 जो 2 मैट्रिक्स थे इनका हमने क्या निकाला, एक एवरेज निकाला। क्योंकि R1 R2 में क्या सिमिलरिटी दिख रही है, R1 जो है ऑक्यूरेंस के लिए है और R2 जो है कंफर्मेबिलिटी के, तो इनका हमने एवरेज लिया। इसी तरीके से R3 और R4 जो है इसका भी अपन ने एवरेज लिया, क्योंकि R3 और R4 क्या थे, नॉन ऑक्यूरेंस और असिम्प्टोमेटिक। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक सिमिलर है, इन दोनों का हमने क्या किया, एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के बाद में एक फॉर्मूला बनाया और इन चारों को कंबाइंड करके एक मैट्रिक्स बनाया, जिसका नाम यहाँ अपन रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखते हैं। रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऐसा किया, R एवरेज ऑफ द 1 2 दैट मींस R1 प्लस R2 by 2 से, और R एवरेज 3 4 डिवाइडेड बाय 1 by n। तो 1 by n जो है वो क्या होता था, एवरेज 1 2 और एवरेज 3 4 में से जो ग्रेटेस्ट नंबर होता था वो वैल्यू हम निकाल लेते थे, और उससे अपन ने इसको किया। तो ये जो सांचेस का ओरिजिनल मॉडल था वो कन्वर्टेड इनटू द सिंगल मैट्रिक्स। और बेसिक मॉडल जो था वो हमने क्या किया, एक नए मॉडल में इसको कन्वर्ट किया, जिसमें कि ये चारों मैट्रिक्स को लेकर के एक ही मैट्रिक्स में पूरे रिजल्ट की एनालिसिस दे रहा है। तो ये जो चेंज हुआ, इस चेंज ने हमारे पेपर को आउटस्टैंडिंग पेपर का अवार्ड दिया, और हैंगजाउ चाइना में इस मॉडल को मुझे और मेरे एक रिसर्च स्कॉलर है जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, इस पेपर के साथ में काम करने वाले, वो है राकेश कुमार त्रिपाठी। वो अभी नहीं है, पर उसने भी इसमें बहुत मेहनत करी थी, और एक डॉक्टर जो जिसके साथ में इन्होंने वर्क किया था मॉडल में मुझे मदद करने में, वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, और उन्होंने, मैं उनका भी थैंकफुल हूँ, तब ये मुझे हम लोगों को अवार्ड मिला। तो कहने का मतलब है कि कैसे हम थ्योरी जो बेसिक होती है उसको किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं थ्योरेटिकली, उस थ्योरेटिकली से जब हमने नया मॉडल बनाया तो इस मॉडल को
हमें अवार्ड भी मिलते हैं और ये सारी चीजें नई होती है। तो ये एक मेरा आइडिया था जो आपको शेयर करना था। इसके लिए मैं पूरे गणित विभाग को, मॉडल साइंस कॉलेज रीवा के लिए थैंक्सफुल हूँ, और जितने भी यहाँ थैंक यू सर। है उनके लिए भी मैं हेलो। बहुत धन्यवाद। हाँ सर नमस्कार। हेलो। शुक्ला जी बोले। हाँ बोले सर शुक्ला जी। हेलो। हाँ शुक्ला जी बोले नमस्कार। हाँ हेलो। थैंक यू सर। आपने फजी सेट्स एप्लीकेशन में जो बात किया है, तो राकेश त्रिपाठी के बारे में क्या आप बोल रहे थे? हेलो। आवाज नहीं आ रही। बात कराइए। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ सर। हाँ सॉरी नमस्कार। यहाँ से कट गया था। आपका जो एप्लीकेशन आप फजी सर्च था, हम लोग आप जानते हैं कि रीवा में फजी सर्च के बारे में अभी कम लोग समझते हैं, और इनिशियल कंडीशन से अपने को सुनना था। और क्योंकि आपने बहुत मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, उसके ऑपरेशन, उसके किस तरह से अप्लाई किया जाता है, भविष्य में निश्चित मैं सुनूंगा और जानूंगा, हमारे स्टूडेंट सीख लेंगे। अब मैं आकर के वहाँ पे लेक्चर कभी सुनने का मौका मिला तो मैं जरूर उसमें अलग से आपको बताऊंगा। ऑफलाइन में ये बात हो पाएगी, ऑनलाइन में थोड़ा सा टेक्निकली दिक्कतें आती है तो वो मजा नहीं आता। चलिए थैंक यू सर। ठीक है, ऑफलाइन तो होगा ही। हाँ 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 ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आज दिनांक 9 को जो हमारे मैथमेटिक्स थे, लेक्चर बहुत ही सराहनीय थे। सभी रिसर्च स्कॉलर, कॉलेज के टीचर्स, यूनिवर्सिटी के टीचर्स, सभी को लाभप्रद रहा। और कल हमारा दूसरा होगा, उसमें 4 स्पीकर्स और होंगे जिनके नाम हैं डॉक्टर जीटी आगे, रश्मि खान एंड डॉक्टर एलन मिश्रा। तो इनसे भी हम रिक्वेस्ट करूंगा, और ये जुड़े हुए हैं कि हमारे बातों को सुने। कल एक स्टार्ट होगा। मैं आभारी हूँ कि सभी लोग हमको समय दिया और अपने कीमती समय निकाल के हमको समय दिया, और हमारे विंध्य क्षेत्र या पूरे भारत के जो लाभप्रद और भी हमको तो शहर और फीडबैक लिंक जरूर भरेंगे। थैंक यू वेरी मच।